First speaker, Sri Charu Thalo, he is Director, Department of Industry, Government of Arunachal Pradesh, Itanagar. Followed by Sri Visal Pillai, he is Program Manager, Innovation Industry, KPIT Technologies Limited, Pune. Next, Engineer Rohit Agarwal, he is CEO, Anil Enterprises, Anil Bamboo Machine Industrial Area, Ujjain Road, Dewas, Madhya Pradesh. And the last speaker of today's program, Dr. S.K. Chakrabarti, he is Assistant Professor, National Institute of Technology, Jote, Itanagar. With this, we will start the program with a welcome address by Sri Siddhi Munyak, Director cum Member Secretary, State Council for Science and Technology, Department of Science and Technology, Government of Arunachal Pradesh. Sir, over to you. Sir, please unmute yourself, sir. You are muted. Sir, you are still muted, sir. Okay. Most respected Dr. Devapriya Datta, Head and Scientific Advisor, SID Division, DST Government of India. Dr. Rasmi Sharma, Scientist, SID Division. Dr. Ravikant Prajapati, Scientist, SID Division, Government of India, DST. Distinguished Resource Person, Sri Taru Talo, Director, Department of Industries, Government of Arunachal Pradesh. Dr. S.K. Chakrabarti, Assistant Professor, National Institute of Technology, Jote, Itanagar, Arunachal Pradesh. Sri Visal Pillai, Program Manager, Innovation Industry, KPIT Technologies Limited, Pune. Sri Rohit Agarwal, CEO, Anil Enterprises, Anil Bamboo Enterprises, Dewas, Madhya Pradesh. And ladies and gentlemen, most welcome to you all in today's program of Azadi Ka Amrit Mahotsav, 1 month, one theme, and today's theme is Atmanirbhar and Industry. This is the second last event of the year-long program Vigyan Utsav, celebrated to portray the state-level SDI ecosystem through month-wise themes launched on 2nd September 2022. The aims is to provide key inputs to the review of self-reliance initiative at state level as well as national level. We all understand the importance of industry in our society and the ways in which it is transforming the developing world. The industry is a fundamental activity in the economy of any state or country and is responsible for processing the transformation of natural products into other finished and semi-finished products. The call for Atmanirbharta is to prepare ourselves for Industry 4 revolution and to not depend on global supply chain. Self-reliant India doesn't mean that we are getting isolated from the world, but it will lead to increase in India's share in global trade. This is very obvious from the ongoing Ukraine and Russian war. Why Atmanirbharta is so important and necessary. Some of the sectors identified by the Government of India are food processing, organic farming, iron, aluminium and copper, agrochemicals, electronics, industrial machinery, furniture, leather, shoes, and so on and so forth. Out of these
furniture, bamboo, organic farming, agrochemical, pharma, and active pharma ingredients, tourism, and hydropower are fields where our state has huge potential. In this regard, an industry-academia relationship also plays an important role. Unfortunately, our state UIL rank is 25th as per the report framework of industry university linkage in research by Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology, Government of India. The report is of October 14, 2019. According to the survey analysis, the state has weak university industry linkages and has scored 2.4 points out of 10, where moderate university industry linkages are observed in the textiles and tourism industry and weak university industry linkages in mineral, agriculture, forest-based, and power industries. I'm happy to inform that our scientists from the Center of Excellence for Bioresources and Sustainable Development, which is developed at Kimin, had developed polyherbal formulation for treatment of painful diabetic neurotherapy and hybrid cotton patch, and a method for its fabrication and developing banana fiber as efficient antimicrobial suture material for surgical site infection and has been granted Indian patent. And the Center for Bioresources, we have obtained 3 patents and have 5 publications and has discovered 3 new plant species in Arunachal Pradesh, which is for the first time in the history of Arunachal Pradesh. The other products are candy, banana flavor, compost, liquid biofertilizer developed with technical support from College of Horticulture, Pasiga. An industry academia linkage has also been industry established with MS Spice Jet Zero Private Limited, a local entrepreneur and local startup Itanagar for successful translation and commercialization of products developed through R&D in the Center of Excellence for Bioresources and Sustainable Development. To explore the bamboo resources of the state, the council had also set up a bamboo treatment plant at Namsai, wherein training has been imparted and the establishment of the plant has completed recently. Besides this, we are also in the process to promote cultivation of aromatic and ornamental orchids in selected districts of Arunachal Pradesh. I'm also happy to inform that our Innovation Hub member, Sri Hatade, a student from Neris, and his team member, Sri Awang Wangsu of Computer Science at NIT Jote, had selected for incubation and startup at ATL Pinnacle and Bhaut Institute, Pune during KPIT Sparkle 2022, organized by KPIT Technologies Limited, Pune. I believe that by participating in this webinar, we will be able to find new ideas and novel partnership for sealing up of our effort for self-reliance of our state. With these 3 words, I welcome you all, and I welcome all the resource persons from which I do believe we will be benefited from their expert talks on today's theme, ATMANIRBHARTA and industries. Welcome you all once again. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to invite our first speaker, Sri Charutalo. He is Director, Department of Industry, Government of Arunachal Pradesh, Itanagar. Sir, over to you. Good morning, all of you. Thank you for giving me this opportunity. Actually, when I got this invitation for making a speech presentation on this topic of Atmanirbhar and industry, actually, I had mistakenly read the date as 17th. But yesterday only I realized it was today 7th. Nevertheless, I will make a
short presentation. So industries are the backbone of the economy of the state, as stated by our Honorable CM. To make Arunachal Pradesh self-reliant and self-sufficient, provisions contained in various central government schemes, programs, and yojanas will be made fully use of. And also we have state industrial and investment policy 2020, giving lots of provisions to make Arunachal and ATMANIRBHARTA. So in this regard, I'd like to make a short presentation also. I'd like to request for enabling me to make a presentation here. Can I share a screen here? Yes, sir. Yes, sir, you can do it, please. Okay, thank you. Yes, sir. You can share the screen. Huh? Here, no. Okay. Okay. Okay, today is Vigyan Utsav, and topic is theme is ATMANIRBHARTA and industries. So I'll make the presentation. So we have Arunachal Pradesh State Industrial Investment Policy 2020. I'll briefly discuss about it, and there is central sector scheme called Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises, in short Sir, sorry for PMFME. the interruption. Sir, Yes. your screen is not visible, sir. Not visible. Yes, sir. Can you please share your screen? Is it visible now for all the participants? No, ma'am, it's not visible. First, you have to open up the presentation, then click on share screen and select the screen that you want to share. I've selected the screen, so is it visible now? No. I'm sharing the Still entire not screen. visible. Okay, we can go without that also. Just once, the last try. No, Yeah. not right, no? Is it visible now? Yes, Is it visible? yes, it is visible now. Yes. Okay, then I was mentioning that we have Arunachal Pradesh State Industrial and Investment Policy 2020. I'll briefly discuss about that. Then what central scheme is there, PMFME in short, that is Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises. And of course, PMEGP, most of us already know, Prime Minister's Employment Generation Program. And under Kisan Sampada Yojana, there is one project, Mega Food Park. I'll briefly discuss about that also, and other schemes I'll shortly mention. Under Arunachal Pradesh Industrial Investment Policy, we have lots of incentives given to the entrepreneurs. Under this policy, main thrust area is food processing and agro-based industries, biotechnology, agriculture, horticulture processing, industry based on non-timber forest, that is like bamboo, cane, medicinal plants, herbs. There are plenty of availability there in Arunachal Pradesh. Textiles and handicrafts, although there is separate department now, but we
have still this provision is there in our policy. Then tourism infrastructure. There's lots of tourism scope is there in Arunachal Pradesh. Then includes resorts, hotels, restaurants, homestays, etc. Adventure tourism infrastructure and forest-based tourism venture, creative entertainment industry. To boost and encourage investment in the trust area set for the policy and envisages to provide the various incentives, which is in addition to the incentives provided by Government of India. So there are different incentives like state capital investment subsidy at the rate of 30% of the cost of plant and machinery, ceiling up to rupees 50 lakhs. But for women enterprises, there is a higher incentive. They are up to 50%, and the ceiling is up to 75 lakhs. There is a state interest subsidy reimbursement, or it can be subvention also on term loan for procurement of plant and machinery. I think for micro, small, medium, different ceiling limits are there. For micro, it is up to 5 lakh per annum, and that is up to 80%. Small 50% up to 15 lakhs per annum. And medium enterprises 50% up to ceiling of 20 lakhs per annum. Non-MSME, that is large, big industries, up to 50%. That is ceiling of 25 lakhs per annum. Besides this, there are other incentives are there. Incentives as interest subsidy is also given to those who have taken loan for working capital. The amount has a ceiling up to 1 crore, and it cannot exceed the 100% of the investment in plant and machinery. Then there is power subsidy is there for manufacturing small, medium units and large units. For small and medium enterprises, up to 75 lakhs can get a subsidy at the rate of 2 rupees per unit. And likewise for large scale industry, subsidy can be up to 2 crore. And that amount total cannot exceed 100% of plant and machinery for 5 years. Then there is a 50% exemption on or reimbursement on with this for stamp duty and registration fee, and 100% exemption for women entrepreneurs. There is 100% exemption for quality certification up to 20 lakhs, and SGST exemption up to 100% reimbursement for 15 years is also available. Of course, there is different conditions for micro, small, and medium enterprises. So this is all about the industrial policy, which the incentives we are providing to attract investment, so that there are more investment, and especially for our local entrepreneurs, local youths, so that they are made self-reliant and self-sufficient in promoting ATMANIRBHARTA. So this is regarding Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises. This is central scheme which started in 2021. This will go on for 5 years, and it mainly supports FPOs, that is farmer producers organizations, self-help groups, cooperatives, as well as individuals also. The main objective of this is the capacity building of entrepreneurs through technical knowledge, skill training, hand-holding supports, etc., and increase access to credit to the micro and existing micro food processing enterprises for upgradation of technology. Support to FPOs, SSGs, producers, cooperatives, along with their entire value chain to enable micro entrepreneurs to avail common services. Support the transition of existing entrepreneurs into formal framework of regulatory framework.
Then integration with organized supply chain by strengthening branding and marketing. All these supports are given under this scheme. That mainly aims to enhance competitiveness of the existing individual micro enterprises in unorganized segment of the food processing industry, and promote their formalization. That is why this term formalization is given. Unorganized enterprises will be formalized. Support FPOs, self-help groups, producer cooperatives along their entire value chain. So stress is given on one district, one product. This scheme adopts one district, one product approach to reap benefit of scale in terms of procurement of inputs, enabling common services and marketing products. ODOP approach would also provide the framework for value chain development and alignment of support infrastructure. This concept is very good for each district will be supported one specific product that will help and enabling common services and marketing of products commonly from this district. In Arunachal Pradesh, we have 25 districts plus one capital complex we have. All the districts have identified their ODOP. Then the applications have also started coming, and some entrepreneurs have already been sanctioned bank loan. Under this scheme, I'll show you. Support is given in terms of subsidy. It is somewhat like that of PMAGP. The credit link grant of 35% of project cost up to 10 lakhs is given to existing unorganized food processing units for upgradation. Then another 35% of project cost to self-help groups, FPOs, cooperatives for capital expenditure. Then seed capital at the rate of 40,000 rupees per month of to members of self-help groups engaged in food processing is provided as working capital, and a credit link grant of 35% of project cost for common infrastructure. And of course, there is support for marketing and branding of up to 50% of expenditure. In this regard, we have already provided seed capital money of 4.79 crore to members of self-help group, and the fund has already been released to state rural livelihood mission, and covering more than 1,000 self-help group members. So this will definitely help in a big way to help our local entrepreneurs, women entrepreneurs, member of self-help groups to realize the ATMANIRBHARTA. They will become a self-sufficient, self-reliant. So then next is under this PMFME, we are again proposing to establish one incubation center at Pasigat. In Pasigat, there is one college of horticulture and forestry. They have proposed one incubation center. So this will be funded by Ministry of Food Processing fully. And under this different food processing, at least 3 to 5 different line of food processing will be there. That will also help greatly in encouraging the farmers, all those producers, in line with just one district, one product. Then next is, of course, this PMEGP, this is Prime Minister Employment Generation Program. This is known to everybody. This helps to generate employment opportunity for the youths and to bring together traditional artisans, rural, urban employment, youths, etc. Then to provide continuous and sustainable employment to traditional and prospective artisans to increase wage earning capacity of artisans
The project cost is up to 25 lakhs for manufacturing and 10 lakhs for service sector. In the state of Arunachal Pradesh, in the rural areas, there is 35% subsidy and 5% self contribution. So here also we are given targets every year. The scheme is implemented through three means, agencies. One is District Industry Center, then another is this Khadi Board, then Khadi Commission. So every year we are generating employment our youths. The target is fixed by the government of India. So this is all about our PMEGP. Then Mega Food Park under Kisan Sampada Yojana. We are fortunate to have obtained approval by Ministry of Food Processing Industry, Government of India. One Mega Food Park has been approved. Of course, this is applied by those entrepreneurs directly to the ministry, and finally it has been approved. It is under process now. Then the state government is assisting external infrastructure like construction of approach road, power supply, water supply. The main objective of this scheme is to provide a modern infrastructure facility for food processing along the value chain from farm gate to market, include the creation of processing infrastructure near farm, transportation, logistics, and central processing center. Main feature is cluster-based approach. The scheme will be demand-driven and will facilitate food processing units to meet environmental and safety standards. So from this mega food park, what is the expected outcome is increased realization of the farmers, creation of high quality processing infrastructure, reduction of wastages, capacity building, creation of efficient supply chain along with significant direct and indirect employment. So this is going on in full swing. Government of India has already released the first installment to the SPV, that is special purpose vehicle. Then state government is releasing the remaining portion of assistance for power supply and water connectivity. Approach rate has already been completed, and some portion of power supply has already started. So in this mega food park, already 3 farms, interested farms, they have obtained approval from Ministry of Food Processing Industry. They will be provided assistance by MOPI also for establishing their units there at the mega food park. This is located at a place called Dolikoto near Bandardua, in just in a complete capital complex region only. Now the central government schemes needs, this is no more in existence, that lapsed, that was over by 31st of March. But under this scheme also, yes, there are subsidies, incentives, and capital incentives scheme, then reimbursement of insurance, etc. So this scheme will be replaced by a new scheme by the ministry. We have been attending various video conferences, and all the suggestions and inputs were already submitted to the ministry, the DPIIT. They will be bringing out another scheme. So under this is when it is new scheme approves, it will also help our entrepreneurs or our investors to invest in northeastern region, especially in Arunachal Pradesh, which is very much deprived of the investment, although the largest is in India, and it will also greatly help in this self-reliance, ATMANIRBHARTA, Arunachal and India. Now, way forward,
There is in the pipeline, we are proposing for establishment of industrial corridor along the foothills area, adjoining the state of Assam, that will range from Balemo in West Kameng district to Kanwari district. Kanwari, that is one town of Longding district. Once it will take some time, but it will greatly help in the development of industries in the area. Then we have one entrepreneurship development institute at Jote that about means 10-15 kilometers from Itanagar. So we will be functionalizing this also. Here, once it starts functioning, all the entrepreneurs will be trained here, capacity building, all kinds of lots of benefit will be there. Then, of course, department is striving to facilitate and promote the development of MSME through and encouraging them through self-employment in the state, and investment in industrial infrastructure is also our target. So thank you. That's all from my side. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, sir, for your presentation. Now I welcome our next speaker, Sri Vishal Filai. He is Program Manager, Innovation Industry, KPIT Technology Limited, Pune. He will be sharing his input on KPIT Sparkle, ATMANIRBHARTA ki aur pehle kadam. Thank you, ma'am. I hope I'm audible. Yes, Hello? sir. Yeah. Can I share my presentation? Sure, sir. Yeah. I hope my presentation is visible on the screen. Yes, sir. It is visible. Yes. So we start with KPIT Sparkle, defining KPIT. What is a KPIT Sparkle? So KPIT Sparkle is our CSR activity, which we have been doing since last 9 years. And we have been promoting innovation throughout the country through this platform. So our agenda for today is about KPIT Sparkle, some examples of success which have come through this platform, and a short methodology for grooming innovation. So what we follow basically. So coming to this slide, it just talks about who we are. So KPIT is a leading independent software and integration partner helping mobility. So in short, we are focused as a company in the area of mobility. We are more than 8,500 people, and we have been there in India, Germany, Japan, Thailand, and the US. So the areas that we are working is autonomous driving, AI and embedded systems, electric vehicles, and digitally connected services. So with that, I will come to a brief of what we have achieved in last 8 years in through the platform of KPIT Sparkle. I'm going to play a video which tells you about this journey and some of the outcomes. And yeah, so I hope these are extraordinary the times video is visible for people like you to make the world a better place by using your talent of technology and engineering. The purpose behind KPIT Sparkle is to ignite that innovative mind inside of you to come up with technologies which can make the world a better place. There has been a lot of push from government as well as private players to build an innovation ecosystem to develop these solutions. And KPIT Sparkle, with this vision, started 7 years back, and today we are in our 8th successful year. So over the last 7 years, we have reached close to about 1 lakh students, more than 1 lakh students,
more than 1,000 academic institutes. The participation has been from across the states, across the nation, from Kashmir to Kerala, from Gujarat to Arunachal Pradesh. The first very important thing that we introduced is also the assured framework. The assured framework allows the person to understand if really his or her idea is a feasible thing to do, and it's not just kept as an idea on the shelf. So along with this, there is one more very important thing that is provided is the mentorship. Mentorship where industrial mentors actually help these students out and they give inputs both in business as well as in technology. So why should you come to Sparkle? Multiple advantages. A, it gives rise to the creativity in you. B, you get to compete with the best in the country. We now have students participating from all over the country, over hundreds of colleges. So you compete with the best. And over and above the very attractive prizes that you can also get support to put your ideas into a commercial success through the incubation centers that we use. Today, we are proud to say that there are 4 successful startups who have emerged out of this hard work that we have put in over the 7 years. And they have been in diverse areas. The first one, which is 1090 Thermal Solutions, they came up with innovative phase change material based cooling box. The second one was Dynamics Mobility Solution, who developed an electric two-wheeler, and very soon they came up with an innovative business model of renting those out. The third one is an agri-tech startup called Sandbird, where they are providing technology-led farming to our farmers in the country. And the fourth, I would want to stress here, is the most phenomenal one out of those, is we were able to nurture a team who could, within a short span of less than 1 year, could put together an oxygen concentrator which could help the entire nation during the challenging times of the pandemic over the last couple of years. We have started collaborated in 2018 itself with Department of Science and Technology actively coming in support of us, then your Atal Innovation Mission, then AICTE, then CIIE at IIM Ahmedabad. So these partners have been adding continuously past 4-5 years, and we are very sure that with this partnership mechanism, we will be succeeding continuously in coming years. तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर, और उसमें हम सबके सहयोग से चलना चाहते हैं. Every year, the theme of KPIT Sparkle is decided on the basis of whether it is impactful, whether it is topical, and whether it is futuristic. The theme actually calls for ideas which can make a huge impact, which is going to affect the future of not just the country, but possibly of the humanity. And KPIT Sparkle comes to you with a theme of energy and mobility for the future. And I must say that nothing is more topical, nothing is more relevant than this theme. So in this case, you can come from any stream and still come together and come up with a solution which can actually make the world a better place. So this was basically the journey till today. So, but we wanted to further show you some examples or some success stories which have come out through Sparkle. So you had a mention of this company called 1090 Thermal Solutions, which is a company made by students. They were students when they came to KPIT Sparkle. They had an idea of a phase change material which they have patented, and the IP belongs to them. And now they are now this video talks about how they have expanded their business. So since we know that the Southeast Asia is a perennially hot region, we started this journey 2 years back, keeping in the mind that we have to reduce the perishability of the agricultural goods, be it milk, be it vegetables. My name is Rajnikant Rai. I am one of the co-founder of 1090 Thermal Solution. We as a company develop
research and manufacture the phase change material. These materials are actually being used to transport or store the perishable items. It can be used for even making the smart building application. It can be used even in the maintaining the temperature or cooling the data centers. Slowly we move to the other food sectors also, like ice cream, meat, fish. Since we started operation at September 2020, yeah, we have for frozen items and fresh products and all, we requires ice boxes and all. Okay, so we have searched and hired a TAN90 team, in which we are keeping our fresh stocks and frozen items to maintain its temperature. If you are sending a material from the frozen items, usually we are getting complaint from the customers like foul smell issue or the temperature negligence issue like that. But after hiring the team, we are not getting any issue or complaints from the customers. We are the official logistic partner for the perishable industry. And talking about TAN90, we had been using their services from the last 3 years. The team is extremely supportive and they can completely customize as per our requirement. And since summer is on the horizon, we think that they are going to be a perfect partners. Talking about the products from, I would say, recyclable cold packs is something which I think is going to be the need of the hour. So really looking forward for this season. ஏர்னைண்டிங் பேட்ஸ் அண்ட் கூலிங் பேனல் நாங்கள் ஹோம் டெலிவரிக்கோஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். அதனால் என்ன பிரயோஜனம்னா எங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஹோம் டெலிவரி பண்ணும்போது எங்களுக்கு குவாலிட்டி கம்ப்ளைண்ட் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வராது. அவங்க கஸ்டமர்கிட்ட பார்த்தா அவங்க ஃப்ரெஷ் அண்ட் மீட்டாக நாங்கள் வந்து சேவ் பண்ணுறது எங்களுக்கு அந்த கேர்னைண்டிங் பேட்ஸ் அண்ட் பேக் வந்து எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரொம்ப My name is Pranit Kohli. I am retail head at Numeret. We are basically working to improve the livelihood for fishermen. So this is where TAN90 come in. So they were also building a product which will help fishermen. They have some panels which helps the fisherwoman or be it the fisherman to reduce the ice cost. Because when they use this panel, they have to use minimum quantity of ice. And this panel, they can refreeze it and reuse it. They also have some sachets which can be used as ice blocks. So they can freeze and they can place in between the fishes. So it will help even spread of the panels. It will give a even temperature to every fish. मला 7-8 वर्ष झाली मच्छी विक्रीचा धंदा करते. पॅनल घेतल्याचा मला असा फायदा झालाय की मला त्याच्यात बर्फ कमी विरघळलेला दिसला आणि मच्छी एकदम फ्रेश राहते. असा मला फायदा झालेला आहे त्याचा. So we are serving pan India and हम different part of country में supply करते हैं. तो अभी तक हम लोगों ने including all the clients, we have supplied something around 15,000 of boxes, 250,000 of panels, and more than 20 lakh sachets. So that was a journey of TAN90. So here the takeaway is a student team who comes to KPIT Sparkle with a innovative idea and understanding the customer, you may say, problem which the customer faces and coming up with a solution. And not just providing the solution, but also providing livelihood to people who work for them. So basically, this is what CSR is about. And with that, I would want to show you the video of the oxygen concentrator. So this video basically was taken, it's an old video, but this guy has already done a technology transfer. And this technology transfer has been, you may say, done with 3 industries who are now manufacturing this product. And it is a made in India product. Hello to all, myself Siddhant Srivastava. Last year I participated in KPIT Sparkle and I will introduce my product oxygen generator. Basically it's a device which basically breaks air into 2 forms, nitrogen and oxygen, and gives us pure oxygen. Basically it's a replacement of oxygen cylinders which is very bulky. So as we can see, this is a one product. It is very portable, it is very less weight. It can be
used in remote locations where cylinders are not being basically transferable or refill is not possible. So it's a very unique devices. I've faced various challenges in this because last year after COVID, we have started working on this, and it's a very big challenge because none of the shops were open. There is complete lockdown in the entire country. So procurement of various raw materials is very difficult to us. Definitely, but ultimately, because of my team, and definitely my team is one motivation source. I really want to introduce few people of my team. Hiten sir, this is Hiten sir, who is the head for procurement for us. He is procure every material for us. And next is Nitin. Nitin actually he is basically a CAD designer, and he has done various CAD modeling of this. There are few or more members like Rupin, my professor Dr. J. Ram Kumar, and Dr. Amandeep sir, who is a part of our team. Basically, how it works, how it makes our life easier because it is easily covered by the app because I think we can easily plug and play anywhere where there is air supply, and this is an oxygen mask. So any patient, like in a hospital, like a home use, it is very useful because we need not to carry the cylinder. So as we see in our second wave, because of oxygen scarcity, most of the people dies. The same thing, the third wave, this can act as a very good boom, and it can also boom the oxygen source for India because in India there is not any big name of Indian manufacturing firm who manufacture oxygen concentrators. There will only be import from China and USA. So definitely it will be a very good health device for us. Future innovators who took part in the KPIT Sparkle, I really want to tell you that team is very important for designing anything. If you can make a team and the people and you sell your vision that what you really want to do, definitely you can be succeeded. So I really want to give a small mantra that make a team, a powerful team who can work, who can dedicate their time and hardmanship and workmanship for your product. Definitely you will get succeed. Thank you. So this was, you may say, the team who developed the oxygen concentrator, and now it has done a successful technology transfer for this. But the more important thing is to understand what is the outcome, other objectives of KPIT Sparkle. So our objectives is very clear that we need solutions for India related to mobility and energy. We are looking out to nurture talented innovators, and we are there to support entrepreneurship. So obviously this is not done just by KPIT, but there is a lot of partnerships that we are into. Partnerships where people are having like-minded, you may say, thinking to support India, and that is the reason why it is a success. From there, as I said, last 2 years we had a very good, you may say, participation from the Northeast. I would like to appeal to the students from Northeast, whoever is looking at this webinar, kindly do participate in KPIT Sparkle. So because we don't have time to show you the 30 incubations which are happening across, but I think the major CSR that we are achieving out of here is, first thing is solution to a real life problem. The second thing that we do is, you may say, about giving the employment that is created when these innovators build their own companies. So those are two of the important things with which I will come to how do we groom innovation. So there are certain aspects of grooming an idea. So we use TRIZ as one of the systems for systematic innovation. We use design thinking as a process, the technology readiness level, so that a person understands the level of maturity of a product. Assured framework is something that is being used by us. A lot of software tools and licenses for virtual prototyping is being given out by our partners like MathWorks and Dassault Systems. So industrial mentors, which is the core basically of this competition, where maybe there is no other contest where you actually have mentors guide you to come up with a solution, because they are also having the same energy or the same thoughts for coming up with the solution.
and there is a lot of focus on business sustainability that we do. We do a lot of you may say sessions with incubation centers, and we do a lot of funding for the actual prototype of a product. So this funding has a limit, and it is given to the finalists. But then definitely this is a service that we provide so that people can actually come up with real prototypes. So definitely pitching to incubation centers and IP ownership and information sessions are one of the very important things which happen during the 9-month long you may say the basic idea is, when I say about TRL level, so if you look at it from TRL 0 to TRL 5, that is what KPIT Sparkle focuses on, where there is just an idea to basic research to technology formulation. There is a need validation which has happened, a virtual prototyping and simulation which allows the person to go for a large scale prototype, and that is exactly the 9 months that is unfolded in KPIT Sparkle. If you look at the other thing that happens is, at the incubation center we have something called incubations which are happening through the DST approved incubation centers, and these incubation centers support to come up with a full commercial application of the idea. And the teams which I showcased have gone through this process, and they have come out successful. And this is exactly the success of KPIT Sparkle. Now, I would like to just bring to note about something I discussed about the assured framework. It's something very important which actually gives an idea. The 7 dimensions, I would say. So A stands for affordable, S stands for scalable, and S stands for sustainability, U stands for universal, R stands for rapid, E stands for excellent, and D stands for distinctive. So these are some of the you may say the core attributes of an idea. So basically these are 7 dimensions. So that is exactly what we provide as one learning throughout this journey. A second very important thing that I had discussed on is the design thinking process. Now this design thinking process is laid out parallel with the you may say the TRL levels, the technology readiness levels, which was discussed earlier. And the reason why we have this thing laid out is so that the student is not just coming up with a prototype which he or she thinks is required, but a real thing which actually will affect some customers, will affect the lives of some consumers who use the product. So this is also one process which is getting you may say the students are getting experience in. And once this process is there is an experiential learning for the student on this process, he or she is equipped with you may say having the access to make new products using this technique. So these are some of the you may say the plus points of KPIT Sparkle. And with that, I would like to thank some of our select incubation partners who have done it, have done their bit in establishing this ecosystem. Along with it, some knowledge partners who we have been working since many years, and
And for the people who are watching this webinar, I would like to say that this is the time to have a look at. So there is registration and idea submissions which have already started for the new edition, and we will be having a premiere round at 31st of August, and a pre-finale round at 25th of September, and a finale in the month of February. When the most important thing which is seen over here is mentoring at each step. So the people who submit ideas are also going to get mentored to come to the top 100 teams, then getting mentored to become the finalists, and again getting mentored for becoming the winners. So these are some of the points which we want to talk about. And this is actually with that I would like to end my session, but before that I would like to thank Shri Mungak ji and the ministry, basically, so that this information can be broadcast to as many student entrepreneurs or innovators as possible. Thank you. Thank you, sir, for sharing insightful work with us. And sir, kindly share your email so that the participant will contact you through that. Yes, definitely. So I think the email and you may say there's a QR code which is given, which is our Telegram channel. So anyone who can scan that can actually get connected. Our you may say the website is sparkle.kpit.com, which has been mentioned in all the slides. So I think in the video itself, all the slides mention that our website. Okay. So anything, we have an email address, kpitsparkle2023@kpit.com, for any kind of queries, any kind of partnerships, anyone who wants to connect with us. Only one email address is there. So thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Visalji. Thank you so much. Now, move to our third speaker, Sri Engineer Rohit Agarwal. He is CEO, Anil Enterprises, Anil Bamboo Machine, Industrial Area, Ujjain Road, Dewas, Madhya Pradesh. He will be presenting a talk on role of technology and entrepreneurship in development of bamboo sector. Sir, over to you. Rohit, sir. I think he's not present here. So we will move to our fourth speaker and the last speaker of today's program, Dr. S.K. Chakravarti. He is Assistant Professor, National Institute of Technology, Jote, Itanagar. He will be presenting a talk on automation using IoT, a future industrialization. Sir, over to you. Am I audible? Yes, sir. Okay, so let me first share my screen. Yes, sir. It is visible now? Yes, sir. It is visible. Just hold on. It's changing, madam? Is it changing? Yes, it's moving, sir. Okay. So first, I like to extend my heartiest thanks to Director Sir
Joint Director Apu sir and Vivek ji for giving me this opportunity to deliver a few ideas related to this very noble cause with Atmanirbhar Bharat. So myself, Dr. Swarnendu Kumar Chakraborty, I'm an assistant professor, Department of Computer Science and Engineering at National Institute of Technology, Arunachal Pradesh at Jote. So first, I must start with this introduction, that what do you mean by this Atmanirbhar? So for that, basically by the name itself, that is a self-dependent, we can say, a self-reliance initiative by Government of India for economic vision and economic development of the country. Like the presentation of the Vishal ji that we have seen, particularly with this oxygen generator that we have seen, means the cause and the reason behind this COVID. Particularly every event having some positive vibe and negative vibe. So definitely COVID, we can't say this is very good for the society, but in terms of innovation, and this is highly related to Atmanirbhar, we can say that it forced us to give something more, to generate some more ideas and self-dependent, that we will be not depending to any other. We should design, we should develop something which will be helpful to us, which will be helpful to the society and definitely to the country. So from this particular point of Atmanirbhar, I like to say something. India saw a push for political self-reliance, for Swaraj, explained as governance or self-rule, during its independent movement. Thinkers of that time, such as Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore, also explained self-reliance not only in terms of a nation but to the self. This included the discipline of an individual and the values in the society. With the foundation of educational institute such as a Vishwabharati University, Tagore also had a role in bringing India closer to a self-reliance in education. M.S. Swamithanan writes that in his youth and like his peers in the 1930s, young and old shared the dream of a free and self-reliant India. Punwa Swaraj, total freedom, and Swadeshi, self-reliance were the goals. In 2022, Union Home Minister Amit Shah acknowledged the Atmanirbharta, Make in India slogans such as vocal to local were adopted from Gandhi's effort towards Swadeshi. Pre-independence dreams which had been forgotten are now being reviewed, adopted, and the charitying the closer to the self-reliance. The research, development, and manufacture of COVID-19 vaccines in India were connected to Atmanirbharta by the President, Vice President, Prime Minister, and other Union Ministers in the separate segment. PM Modi has stated that Made in India vaccines are a symbol of Atmanirbhar Bharat. So from this philosophy, basically, I like to extend this particular talk in the basis of Atmanirbhar. So 5 pillars of self-reliant India, how we can say. The first one is basically economy. Definitely, it gives us a jump in an incremental change in terms of economy. Infrastructure, one that represent modern India, means the way we'll be depending to ourselves, we just going to change the lookout of our nation also. System, it's a technology driven. Demography, vibrant demography of the largest democracy. Demand, full utilization of power of demand and supply. So these are the 5 pillars. Now over here, this is a major 5 this particular Atmanirbhar. The Atmanirbhar Bharat stimulate package announced by government consists of following 5 tranches. First is the business includes MSME, like small scales, medium enterprises by the by that particular finance minister Nirmala Sitharaman. She has announced this particular concept. Poor including farmers, agriculture, new horizon of growth, government reforms and enables. Let me just hide this one.
Now, in terms of this particular, the basic concept in terms of Atmanirbharta that I have already told you, vocal for local or local for global, how we think global and act local. Local products in India should have global appeals and reach. We should develop, means in this region, that this is a something 11th year I am staying at Arunachal. We have a huge natural resources, but we need to develop by taking care, by upbringing those particular natural resources. We should convert the use of latest technology. We should convert that particular resources by switch to make a particular product, and that will reach to globally. India in transforming passive market to an active manufacturing hub to a global product stream. Make for the world. Quality of Indian products are as competitive as global items. Definitely, our products now, many products are reaching to the globe, anywhere in the globe. Brain drain to brain gain. Definitely, India's overseas are not a liability for India, rather than they are the part of India's brain drain. This is the technological growth in terms of industry that you can say that in a 1780s we have a industry 1.0. They have termed only machinery, water power, steam power. We have, then there is a gap of something 120 years. In the era of 19th, we have a mass production ability line, electricity, industry 2.0. Then in the era of 1970, we have an introduction of computer and automation, industry 3.0. Then industry 4.0 means basically internet and cyber physical system, and from 2020 is a human cyber physical system we have. This is a something industry 5.0. Now this is a basic topic, that how we can this IoT, Internet of Things, can help us in terms of Atmanirbharta. So there are the few parts I have chalked out in terms of this increased hub time. There is a no time restriction when business is automated. Operational efficiency, IoT bring intelligence through sensors and scanning technologies. Then efficient building functionality, lighting, humidity, temperature control can be automated through IoT. Improve safety compliance, automated maintenance, reporting and diagnosis through IoT we can do. Then stagnant access control can restrict of grant privilege for operating specific machinery. Then enhance customer insights, like assisting customers through direction or locating items. These all issues can be achieved through IoT. Now this is a industry IoT, industrial IoT, that how IoT can be clubbed with industry. That's why they told this is IIoT. So first is that strong focus on machine to machine communication, like big data, machine learning. This can be over here for this. Then IIoT enables industries and enterprise to have better efficiency and reliability in their operations. That IoT can do, means we can club the machineries with particular IoT, and we can have a more access with the machineries. The convergence of IT and operational technology provides industries with greater system integration in terms of automation and optimization, as well as better visibility and supply chain and logistics. This basically means remotely, means through internet. If we can have access of a very giant machinery through internet, and by the help of IoT, Internet of Things, with the sensors and some different these issues or products, so we can access, we can get the data, we can process the data, and we can direct that particular machinery for its future course of action. Handle operational technologies can be accepted to be well vested in such aspect as worker safety and product quality. Definitely, means in terms of when we are accessing high machinery, there is a chance of some accident or some unseen circumstances. But through sensors, if we can some alarm oriented things, or some sort of threat if we can predict, okay,
then definitely through IoT we can access, we can predict, and we can give signal. So before happening that particular unseen circumstance, we can protect our people for that particular bad event or that unseen event. Next one is this internet on medical things like IOMT. I have given the IOMT. This is a very, very important. Basically, this after this COVID, this medical means we can say this is drone, by application of drone and the combination of IoT. It can be a huge role in terms of present days medical operation, and in a coming days means future, means totally automation through a particular app. Means we can access the people in a, suppose we have a smartwatch nowadays, many people used to have. So what's basically we are doing with this particular smartwatch is not nothing but an IoT, the application of some sensors and this thing. So we can monitor our heartbeats, we can how many steps we have made for a day, particular our BP, even sugar level, everything. So if some sort of threat we can access, then definitely we can consult our doctor and we can take the precaution. Like in terms of diabetic control, okay, in terms of diabetic control also this IoT have a huge role. Means through this is called the biosensor, IOBTN, Internet of Bio Nano Things. Means whenever we have a issues of diabetic, for what we have a diabetic, means when we have a increase of glucose level in our body, then we can have a diabetic. So if we can control this particular glucose, or whenever we have a high level of glucose, something we can push in our body through a machine or through a IOBTN, then you can control. So that's why this health, to monitor the health or the medical issues, it's of a huge role. Approximately 60% of global healthcare organizations have already implemented Internet of Things technologies, and an additional 27% are expected to do by 2019, which is before COVID, we can say. Smart devices such as wearables and medical and vital monitors strictly for healthcare use on the body, I have already told. IOMT allows wireless and remote devices to securely communication over the internet to allow rapid and flexible analysis of medical data. This is a huge role. The day will come when for the many, even up to for the operation, means operation purpose or major operation, or apart from that, everything can be controllable through this particular IoT, or this is automation, we can say. Okay, this is all about due to after COVID pandemic, like this oxygen generator we have seen. My last speaker, he has delivered. This is an invention. This is a means just a smartest and the very honest example of this Atmanirbhar Bharat. Then this is the future of medical industry using IOMT. How we can see the future? This is streamlined and process and improve the patient experience, patient benefit over convenience, higher engagement, and fewer in personal medical visit. Personally, you no need to visit. Okay, through just this years, by using, even from the pictures you can see, through the smartphone and the smartwatch, you can easily monitor, the doctors can easily monitor your health, and from that you can have you can get their treatment. Provides have gained more accurate data, better diagnosis, and more efficient time management. RFID tags, infrared sensors, and computer vision collected real time data about hospital bed availability. Everything can be possible. The next is IoT in e-commerce industry. Definitely this particular I have already told this drone, the example of drone. Okay, inventory management we can do, supply chain management, automate maintenance and warranty, personalization means display customer choice, better customer experience, automate EMI and payment with security. Like this particular drone, application of drone, manywhere even in my coming slides I'll be showing that how these drones going to help us in farming also. But suppose in air pollution control, if you like to check air monitoring control, somewhere, some place, some area where direct human intervention is a bit risky, then through this drone and this use of IoT, okay, we can access
and we can check the quality of air and what are the substances are available in that particular area. Suppose in this drone also, in terms of farming, monitoring of farming can be possible anywhere we can use. But not only this, not single a drone can be possible, it should have a bundled application of IoT on that will helps us for the particular operation, capturing data, processing data, and guide that particular client what to do after analyzing those data. Next one is IoT in banking industry. Definitely directly nowadays also we can have a use of this RFID. This operation means with a particular certain limit, you no need to swap your card, just simply you can touch and you can access the particular, you can do payment basically. This real-time data gathering, enhanced fraud detection, this is a means main threat nowadays in cyber operation. Okay, how we can do it? Improvement of investment and trading activities, improve customer services, then chatbots for inquiry, simplifying operational method and customer centricity. Everything means you no need to visit. Basically nowadays we are hardly visit banks. Okay, we have the different operations or these particular apps like SBI, YONO, and ICICI. Everything is, all banks have their own apps, so you can do means the digitalization and this particular cashless payment. This is also a concept of our government. Okay, so instead of carrying a very less cash, we can do so, but this IoT can help also over here also. So this is a complete automation to make our country more and more Atmanirbhar. This IoT, Internet of Things, having a huge role and the big role to play to have it or to get it. The next one is IoT in financial industry. Already I have basically told, even you can, for this particular diagram, you can basically see that different operations, okay, we can easily do by application, by applying these like borrowers, collectors, the loan, someone having a loan, online payment, vehicle loan for vehicle loan, house building loan, everything can be possible in this particular one. The next one is this IoT in transport and logistic industry. Everywhere, that means like FASTag. Nowadays we are using a FASTag. This is a simple example, okay, for this particular application. Even in terms of like many cars nowadays, the high-end cars having the different sensors, which is a simply you can locate. Okay, they can analyze the threat in terms of, suppose a car just going to sense some mischief in its engine or somewhere else, so that particular car can have this particular signal, like the seat belt. If you are not wearing a seat belt, it used to pop up certain signal. If you have a less pressure in your wheel, then also it used to give some signal. So this is basically a total automation, what I must say, that to have our likelihood more easy and smooth and safely we can run, then it's having a role. And the objective is that by using this particular concept, Internet of Things, the young generation, the young engineers, they can think to build many what should I say, technology or protocol by which we can have our own product which are very useful in society, and end of the day we are going to claim ourselves that we are Atmanirbhar, we are self-capable. So like these things, these benefits we can have: location management, inventory management, fleet management, predictive analysis, capacity sensing, drone based delivery, self-driving vehicle. Already this is under this vehicular FANET, we can say vehicular FANET. Then scalable cloud service. This is all totally bundled we have. The next is IoT in agriculture, that I used to think that the IoT having a huge role in terms of what farming, particularly in this we have a jhum cultivation we have seen in this area, in this different areas of Arunachal Pradesh,
where in the landscape of mountain landscape we used to have our farming. So this particular IoT basically having a huge role. By being drone, we can capture the moisture, everything, this what should I say, the characteristics of soil, okay, and to how means we can capture the weather at the dead end of this particular mountain, whether there is a fertilizer is required, everything, all data can be captured through drone and this clubbing of this IoT, and we can take care our crops very productively, like the precision agriculture, crop monitoring that I've already told, livestock monitoring, irrigation management, smart pest control, whether we need to do some pest control over the smart greenhouse, fertilizer management, weather forecasting. Definitely it's very useful, predictive analysis of smart farming. Farmers have started to realize that the IoT is a driving force for increasing agricultural production in a cost effective way. I always used to believe that this application, this, so we can think to develop, because drones are available, but how more technologically we can support our farmers, okay, to increase their to protect their crops more effectively, by which they can earn more and they can have a good time with their farming. Next one is a contribution in ATMANIRBHARTA. This is the I think this is our key point to discuss. Like automate the working process, it's increase productivity and uptime, improve process efficiency, accelerate innovation, reduce asset downtime, enhance operational efficiency, create end-to-end operational visibility, improve product quality, reduce operating cost. This is main things we can say. Optimize production scheduling, improve overall equipment effectiveness. Yeah, ultimately improves customer experience and leads to higher sales in local as well as in global. And by this I like to conclude my talk over here. This is through the IoT, like technological inputs, we can accelerate the business of MSME, small scale and medium enterprises, development of poor people by generating business, development in agriculture, development in government reforms and enables ultimate development of nation. So thanks a lot. This is means my contact details. If you like to have anything more on that, definitely please do contact. I am available. I used to stay at Jote only. Okay, so you used to visit my place or over mail or over phone, you can communicate. So again, I like to thanks our director sir, our joint director sir, and Vivek ji for giving me this opportunity, and in lastly the Department of Science and Technology Arunachal Pradesh, and as well as the Government of India for delivering this session. Thank you, sir. Thank you, Chakravarti sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for sharing your presentation with us to foreign in this field. Now, Rohit sir, are you available here? Yes. Okay. Now, I would like to welcome Sri Engineer Rohit Agarwal. He is CEO, Anil Enterprise, Anil Bamboo Machine Industrial Area, Ujjain Road, Dewas, Madhya Pradesh. He will be presenting a talk on role of technology and entrepreneurship in development of bamboo sector. Sir, over to you. Good afternoon, everyone. Good Can you hear me? Yes, sir. This is Rohit Agrawal from Anil Bamboo Machines, Dewas. So I just noticed that I have a particular background in my slide. This is because I'm using my daughter's computer and she's learning Gita. So that's why that background. So I'll start my presentation, and let me do the sharing of screen.
Okay, can you see my screen, please? Yes, sir. Okay. So thank you very much, Director Sir from Arunachal Pradesh State Council for Science and Technology for giving me this opportunity. And good afternoon to the associates, the officers from Industries Department, and all the other participants and listeners. So my topic for today is role of technology and entrepreneurship in development of bamboo sector. So bamboo sector is a very upcoming sector. Every one of us know that. And Arunachal Pradesh is the best placed in India to actually capture this space. And what is the role of technology and entrepreneurship in development of this sector? I'll be going to talk on this topic today. So I'll be speaking in Hindi, in English, and combined. So the main agenda is I'll tell you who we are, and then I'll be classifying the bamboo technology, how you can think about what machines are available, how we can classify the whole machines, because already we are manufacturing some 25-30 machines, and there could be another 20-25 machines which you can manufacture. So how to classify these machines, and what are the flow charts? So flow chart is very important, because if you are making any product, there are multiple ways of doing this, and we have to always check out what suits us. And then we'll be talking about bamboo businesses. What are the available bamboo opportunities in business area? What businesses entrepreneurs can take up, and how we can create a successful bamboo industry in India, in Arunachal Pradesh. So about us, so we are, the name of my company is Anil Enterprises. Our company is about 36 years of experience, and we started bamboo machinery business in about 16 years back. So our qualification is that we are mechanical engineers. I'm MBA from MBA Gurgaon, 2002 batch. And I joined my business in 2005. 2006, we started manufacturing bamboo machines. And from there on, there was no looking back. We had been into heavy engineering equipment building before that. And we have been associated with BHELs and defense factories for their customized requirement. But after starting with bamboo had a special attraction in terms of scope of technology development, the kind of variety we get from all over India in bamboo. So for so many years, we have worked with the best known institutes like EPT, FRI, Dehradun, NMBA, Tripura Bamboo Mission, MP Bamboo Mission, so many bamboo missions, NBDB Maharashtra, BCDI Agartala, NGOs, so many forest officers, a lot of private entrepreneurs, small and big. So that helps us to continuously work on the technology, on the quality. And so we have worked with so many customers, and from customers from outside also. So how do we classify these technologies? Bamboo technology को आप चार तरह से देख सकते हो. सबसे पहले तो primary processing. Primary processing means basically bamboo cutting, bamboo knot remover, inside knot remover, external knot remover, bamboo slicers, planers, bamboo stick making, polishers, sharpeners, flattening. And then there are equipment kind of plants, bamboo treatment plants. So one is bamboo vacuum pressure impregnation plant. This has taken up very, this has caught the attention of almost all the entrepreneurs, all the states. और हम लोगों ने अभी इंडिया में VPI प्लांट्स काफी सप्लाई किए हैं, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलप की है, इनोवेशन किया है उसमें, और इजी टू रन इक्विपमेंट है ये. और इससे क्या होता है कि अगर आपको बैम्बू को 30 साल 40 साल की लाइफ देनी है, तो आप आसानी से 2 या 3 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद उसको ये इंश्योर कर सकते हो कि इसकी इतनी लाइफ मिले. तो बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट्स, बैम्बू ड्रायर्स वही इक्विपमेंट्स में आ गया, कार्बोनाइजेशन प्लांट, चारकोल प्लांट, ये सब इक्विपमेंट्स में आ गए. फिर आया सेकेंडरी प्रोसेसिंग. सेकेंडरी प्रोसेसिंग मतलब जब हमें बैम्बू को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ प्राइमरी प्रोसेसिंग मशीन से काम नहीं चलेगा. जैसे बोर्ड बनाना है, चॉपिंग बोर्ड बनाना है, या इवन प्लाई बोर्ड बनाना है, लेमिनेट्स बनाना है, या ब्लाइंड्स बनाना है, या फिर और अभी तो और काफी नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जैसे कि टॉयज बनाना है. तो उन सब में सेकेंडरी प्रोसेसिंग, उसमें CNC राउटर्स लगेंगे, आपके लेजर मशीन्स लगेंगी,
और प्लाई इंडस्ट्री में आपको लगेगा हॉट प्रेस, ग्लू स्प्रेडर, सैंडिंग मशीन, व्हाइट बेल्ट सैंडर्स, वीविंग मशीन, पैकेजिंग मशीन, तो ये सब सेकेंडरी मशीन में आ जाएंगे। और फिर हो गया फिनिशिंग लाइन। फिनिशिंग लाइन जैसे प्लाई इंडस्ट्री में, अगेन बोर्ड इंडस्ट्री में फिनिशिंग लाइन हो गया यूवी कोटिंग, लैमिनेट्स, जो बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग मशीन सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है किसी भी कस्टमर को अगर बैम्बू यूज करना है तो। उसको बैम्बू में इतनी सारी स्पीशीज है, उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऊपर से लेके नीचे तक वेरिएशन है प्रॉपर्टी का। तो उसको हम लोगों को ये गाइड करना होता है कि किस तरह से वो कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, द प्रोडक्शन दे वांट, द क्वालिटी दे वांट। तो जो प्राइमरी प्रोसेसिंग मशीन होगी उसमें सबसे पहले क्रॉस कट हो गया, एक्सटर्नल नॉट रिमूवर हो गया, स्लाइजर्स हो गए, चेन स्पीडर्स हो गए। तो काफी ऑडियंस होगी जिनको ये मशीन्स के बारे में उतना मालूम नहीं होगा, तो मैंने कुछ बेसिक वीडियो भी रखे हुए हैं, तो मैं उन वीडियोस को रन कर लेता हूँ ताकि देखिए आप ये वीडियो देख पा रहे हैं ना? हेलो, यस सर। ओके, so this is a basic cross cut machine जिसमें आप बैम्बू होल्डिंग अरेंजमेंट है और मेजरमेंट भी है। अगर ये गेज लगा हुआ है आगे, अगर सेम उसमें है, आपको लेंथ में काटना है तो आप आराम से काट सकते हो, सेफ्टी अरेंजमेंट से हर तरह से। ये एक बेसिक क्रॉस कट मशीन है। तो हर एक जो बैम्बू का कटिंग शुरू होगा वो हमेशा क्रॉस कट से शुरू होगा। और ये मशीन अगर आप 2 लोग मिलकर ऑपरेट करते हैं तो 4 टन बैम्बू जैसा काट सकते हैं दिन भर में, डिपेंडिंग ऑन कितनी लेंथ का काट रहे हैं एंड ऑल, बट इतना काट सकते हैं। फिर एक सेकंड मशीन होती है एक्सटर्नल नॉट रिमूवर मशीन। तो एक्सटर्नल नॉट रिमूवर में आपको चेन स्प्लिटर दिखा देता हूँ, उसी में एक्सटर्नल नॉट भी दिख जाएगी। दैट्स ए स्प्लिटर मशीन। ये गुजरात का वीडियो है। वो जो मैंने पहले वाला दिखाया था वो साउथ इंडिया का वीडियो था, ये गुजरात का वीडियो है। देखिए लंबा स्प्लिटर लेके ये लोग बैम्बू कंस्ट्रक्शन में है, तो बैम्बू स्प्लिट करके और ये लंबा लंबा स्लाइस करते हैं ताकि उसको वीविंग कर सकेंगे। पर ये वाला जो मशीन है ये बैम्बू एक्सटर्नल नॉट है, जो इंटरनल नॉट के लिए भी यूज होता है। सर वीडियो इज नॉट विजिबल। वीडियो इज नॉट विजिबल। कोई भी वीडियो विजिबल नहीं हुआ कि अभी नहीं है? नो, ओनली द स्लाइड इज सीन। सॉरी, अच्छा, ओनली स्लाइड इज सीन। I'm very sorry. Video is not visible. Sir, video is not visible, but the slide is visible, sir. How do we see the video, ma'am? Sir, that one I don't know. Okay, give me a second, please. Give me a second. Now Sir, is you it shared visible? now it is visible. Now visible. I got it. How? Okay, I'll show it again. ये चेन स्प्लिटर मशीन है। फिर आप क्रॉस कट भी नहीं देख पाए होंगे। जी सर, हम वीडियो नहीं देखा फर्स्ट। ओके, मैं उसको फिर से दिखाता हूँ। तो वो चेन स्प्लिटर से स्प्लिट किया लॉन्ग बैम्बू को, इस स्लाइवर्स बना रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। और ये वाला जो मशीन है जो आप देख रहे हैं ये एक्सटर्नल नॉट रिमूवर है, इंटरनल नॉट के लिए यूज कर रहे हैं। अभी देखिए आप ओके, 1 second. I will hello, am I there? Yes, sir. Sorry for the technical glitch. So I'm there, but why the sharing has stopped? Give me a second, please. Now see this video. So for the newcomers in the audience, जिनको बैम्बू के बारे में ज्यादा नहीं मालूम होगा अभी तरह से प्रोसेसिंग होना है, so this is the first machine in bamboo processing, bamboo cross cut machine. अभी आप देख पा रहे हैं ना? जी सर।
Splitter, okay, splitter of the slab. Okay, slavery. Okay, I'll continue the presentation. I think I'll see how to show more videos later on. Okay. So splitting कई तरीके से हो सकता है, जैसे मैंने बताया, एक आपका लंबा स्प्लिटिंग हो गया। फिर सिमिलरली अगर आपको 4 साइड प्लेनिंग करना है तो पैरेलल स्प्लिटर इज द राइट वे, जो नीचे आपको मशीन्स आप देख पा रहे हैं अभी। कैन यू सी माय स्क्रीन प्लीज? Sir, presentation is not seen. Now the video is seen. Video is seen? Yeah, video is seen. Okay, 1 second, sir, please. This is visible? This video is visible? Sir, Yes. Okay, this is visible now? Yes, sir. Yeah, that's a slicer machine. A round stick. I'm sorry for all the problems. This round stick बनाने के लिए ये स्लाइजर मशीन यूज होता है नॉर्मली इंडस्ट्री में, जिसमें आप देखेंगे 2 mm का स्लाइवर यूज होता है। राउंड स्टिक नॉर्मली 1.3 यूज होती है। तो स्लाइवरिंग ऐसे होता है, इसमें वेरिएशन है, आप 5 mm, 4 mm, 6 mm स्लाइवर भी आराम से निकाल सकते हो। एंड एक सीजन्ड वर्कर इस तरह से स्पीड में भी काम कर सकता है। And this thickness and all is settable, so it's not a problem. These are all side videos, तो थोड़ा videos में हिलता डुलता नजर आ रहा है, but side videos हैं ऐसे। ये त्रिपुरा का वीडियो है। Okay, and okay, so I'll show you one. Can you see my screen? Direct YouTube video. So, hello, can you see me? See my this video? Yeah. So ये एक वीडियो जो YouTube पे है, इसमें मैं दिखा रहा हूँ कि ये कैसे अगरबत्ती स्टिक्स बनती है। एक्चुअली अगरबत्ती स्टिक्स का अभी इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है। 200 से 300 टन बैम्बू स्टिक्स रोज इंडिया में यूज होती है। अगरबत्ती की स्टिक्स नॉर्मली 1.3 mm डायमीटर की होती है, और उसको बनाने के लिए जो मशीन्स यूज होंगी, सबसे बेसिक सेटअप जो यूज होगा वो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। बैम्बू क्रॉस कट मशीन जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, ये मैनुअल स्प्लिटर है। अगर कोई लंबा स्प्लिटर मशीन अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैनुअली स्प्लिट कर सकता है। ये अगेन त्रिपुरा का वीडियो है, कुमारघाट क्लस्टर का वीडियो है। ये बैम्बू का स्लाइसिंग किया हमने, पहले कटिंग किया, फिर स्प्लिटिंग किया, फिर स्लाइसिंग किया। ये नॉट टू नॉट प्रोसेसिंग का वीडियो है। तो नॉट टू नॉट कैसे निकलेगा स्टिक, वो उसका है। 4th स्टेप में हम लोग बैम्बू स्टिक बना सकते हैं, लेकिन 4th स्टेप में बैम्बू स्टिक बनाने से हमारा सिर्फ अभी 50% काम ही हुआ है, क्योंकि इसके बाद बैम्बू स्टिक को फाइनलाइज करने में काफी मेहनत होती है। ये सिक्किम का वीडियो है।
एक बार स्टिक बनने के बाद स्टिक कटिंग होती है स्टिक साइजिंग मशीन पे। उसके बाद स्टिक पॉलिशिंग होती है। इस बीच स्टिक को ड्राई करना जरूरी है, उसके लिए ड्रायर लगेगा। ड्रायर दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्रायर होता है और दूसरा ड्रायर होता है बैम्बू वेस्ट यूज करते हुए। तो ड्राई करने के बाद पॉलिश होगी और पॉलिश करने के बाद सॉर्टिंग होगी, जो इस वीडियो में अलग से नहीं दिखाया हुआ है। और जब भी आप कोई बैम्बू मशीनरी यूज करेंगे तो आपको कटर शार्पनिंग रेगुलरली करना है, इसलिए ये सॉ शार्पनिंग मशीन बहुत मस्ट है किसी भी सेटअप में, स्पेशली 4 साइड प्लेनर के लिए और राउंड स्टिक मशीन के लिए। ओके, आप प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं मेरा? हेलो, यू कैन सी माय प्रेजेंटेशन प्लीज? Yes, sir. It is visible. Okay. So these are the primary processing machines. मेरे पास कुछ और वीडियो थे, मैं अभी बाद में दिखाता हूँ आपको। 4 साइड प्लेनर्स आएंगे उसमें, और फिर सेकेंडरी प्रोसेसिंग मशीन में जैसे टूथपिक मशीन्स हो गई, स्कीवर मशीन हो गया। ये बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट है। ये बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट में नीचे केमिकल का स्टोरेज है। ये हम लोगों ने पोर्टेबल इंटीग्रेटेड प्लांट इनोवेट किया है और ये काफी इंडिया में काफी जगहों पे है, जिसमें नीचे वाले टैंक में केमिकल प्लस वाटर का सॉल्यूशन है। 7 to 8% नॉर्मली यूज होता है। जो केमिकल यूज होता है वो दो तरह से होता है, या तो अगर आप इंटरनल यूज कर रहे हैं घर में, मतलब जहाँ रेन वाटर में एक्सपोजर नहीं है, तो बोरिक एसिड प्लस बोरेक्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आपका एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, जैसे फेंसिंग हो गया, या आप रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो फिर आपको सीसीबी जैसा केमिकल यूज करना पड़ेगा। तो केमिकल एक बार उसमें 8% सॉल्यूशन बना लिया। ऊपर के जो बड़ा वाला राउंड सिलेंडर दिख रहा है वो स्पेशली फैब्रिकेटेड होता है, और उसके अंदर बैम्बू डाल के पहले वैक्यूम लिया जाता है और बाद में वैक्यूम से हम लोग केमिकल को सक्शन करते हैं। तो केमिकल के सक्शन के बाद उसमें प्रेशर करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में 3 से 3.5 घंटे लगता है। लोडिंग अनलोडिंग मिला करके 3 से 4 घंटे लग सकता है एक बैच में। और आपके पास आप फिर कस्टमर को सर्टिफाई कर सकते हो कि आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ है। 9 से 10 kg में आप इसको ट्रीट करते हो प्रेशर में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर के हिसाब से साइज देते हैं। तो ये आप लेफ्ट में देख रहे हैं, ये बड़ा वाला प्लांट है। तो इसमें 1 मीटर बाय 20 फीट 22 फीट का लेंथ है इसका, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होगा। लेकिन जो एक छोटा एंटरप्रेन्योर है और वो फर्नीचर बना रहा है, तो फर्नीचर में तो नहीं तो बाद में पाउडर गिरने लगेगा, पेस्ट लग जाएगा, उसमें दीमक लग जाएगी, और तो वो सब कंट्रोल करने के लिए फर्नीचर का पोल भी ट्रीट करना है, तो उसको बहुत छोटा ट्रीटमेंट प्लांट देते हैं, जैसा आप राइट में देख रहे हो। और इसका डायमीटर कम होता है, इसका लेंथ कम होता है, लेकिन उस बंदे का जो अपना छोटा सा एक शॉप रन कर रहा है, उसका पर्पस बहुत अच्छे से फुलफिल हो जाता है। तो ये टोटली कस्टमाइज्ड है, साइजेस एंड डायमेंशंस। फिर एक 4 साइड प्लेनर है। आजकल आप देखेंगे टूथब्रश की बहुत बात हो रही है। टूथब्रश डेफिनेटली आने वाले सालों में प्लास्टिक टूथब्रश बंद होगा और टोटली बैम्बू टूथब्रश पे आ जाएंगे, क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पूरा सॉइल में मिक्स हो जाएगा। और हमारा जो प्लास्टिक टूथब्रश है वो तो आज तक लैंडफिल्स में पड़ा होगा। तो टूथब्रश के लिए ये अपने को स्लैट्स बनाने पड़ेंगे 4 साइड प्लेन। और ये ना केवल टूथब्रश में यूज होता है, बल्कि ये आपके अब बैम्बू बोर्ड मेकिंग, चॉपिंग बोर्ड हो या बड़ा लैमिनेट बोर्ड हो, या फिर आपका लैमिनेट फर्नीचर बनाना हो, तो सब जगह पे 4 साइड प्लेनर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। या इंटीरियर में अगर आपको यूज करना है, जैसे बैंगलोर में एयरपोर्ट आ रहा है, तो उसमें टोटली बैम्बू यूज हो रहा है एयरपोर्ट में, और उसमें जो बैम्बू में वो इसी फॉर्म में यूज करेंगे 4 साइड प्लेनिंग स्लैट्स में, जो ऑफकोर्स सारा कुछ मटेरियल तो बाहर से आ रहा है, बाहर की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बट जिस फॉर्म एंड शेप में बैम्बू यूज होगा मोस्टली 4 साइड प्लेनिंग स्लैट्स में यूज होगा। दीज आर द ड्रायर्स। मैंने बताया था ड्रायर 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्रायर एंड बैम्बू वेस्ट ड्रायर। ये इलेक्ट्रिकल ड्रायर है, आप दोनों पिक्चर में देख रहे हैं। ये अगेन कस्टमाइज्ड है, और जिस तरह से कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, इसमें एयर रिसर्कुलेशन और हीटिंग सिस्टम सब ढंग से होता है। मटेरियल को लोडिंग अनलोडिंग और एक फिक्स साइकिल के तहत बैम्बू ड्राई किया जा सकता है। स्टिक्स के लिए बहुत काम का है, स्लैट्स के लिए बहुत काम का है। देखिए, ये कुछ फ्लो चार्ट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल राउंड स्टिक मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, तो क्रॉस कट किया, फिर सेकंड स्टेप में स्प्लिटिंग, स्लाइसिंग, राउंड स्टिक मेकिंग, 4th स्टेप साइजिंग, ड्राइंग, फिर 7th स्टेप में पॉलिशिंग,
फिर सॉर्टिंग पैकिंग। लेकिन सॉर्टिंग जितना सरल लग रहा है इस फ्लो चार्ट में उतना नहीं है। सॉर्टिंग में काफी मेहनत करनी होती है और उसके लिए भी हमने एक नया मशीन बनाया है, लेंथ सॉर्टिंग मशीन। लेकिन उसके बाद भी काफी लेबर ओरिएंटेड टास्क है। तो ये अभी मैं पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बता रहा था कि 200 से 300 टन बैम्बू स्टिक रोज इंडिया में लगती है, कंज्यूम होती है। और इंडिया में अभी मेरे हिसाब से 25-30 टन जैसा प्रोडक्शन ही हो रहा है रोज। बाकी सारा जो 200 टन 150 से 200 टन बैम्बू स्टिक है वो चाइना से फुलफिल हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर एक स्टेट, हर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ एंटरप्रेन्योर को रेडी मार्केट है। यहाँ तक कि आप मानिए कि जो इंडिया के टॉप 3 प्लेयर्स हैं, आईटीसी, साइकिल ब्रांड और जेड-टेक, तीनों के सेल्स की टीम हमारे हमेशा कांटेक्ट में रहती है कि आपने नए किस एंटरप्रेन्योर को ये मशीन दी है तो हम उससे जाके बैम्बू स्टिक खरीदें। मतलब ये अभी सेलर्स मार्केट है जहाँ आदमी बनाएगा, सही बनाएगा अगर व्यक्ति एंटरप्रेन्योर, वो आराम से बिकेगा। क्योंकि मैंने आपको डेटा भी दिया उसके लिए, ये वीडियो हमने देख लिया। अच्छा, अभी बैम्बू में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि 2 बहुत बड़े चैलेंज है बैम्बू में। एक तो ये है कि अगर आप बैम्बू स्टिक बना रहे हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो, बैम्बू के सारे पार्ट्स काम नहीं आएंगे। अगर बैम्बू को आप डिवाइड करेंगे तो बैम्बू को आप इस तरह से देख सकते हो कि एक टॉप पार्ट, मिडिल पार्ट, बॉटम पार्ट, और दूसरा क्लासिफिकेशन साइमल्टेनियसली होता है आउटर लेयर एंड इनसाइड लेयर। कौन से आउटर लेयर एंड इनसाइड लेयर। तो आउटर लेयर बहुत डेंस होती है। अगर आप उसको क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो बिल्कुल काला काला होता है। मतलब अब इतने पास डेंस फाइबर होगी कि अलग अलग दिखेगी नहीं। तो वो स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, वो अगरबत्ती में जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं, हॉलो सेक्शन में जाते हैं, तो वो नरम होती है, फुसफुसा होता है, मतलब स्पॉन्जी होता है मटे पे, और दैट विल नॉट गो इनटू 1.3। तो बाहर की लेयर्स 1.3 में जाएगी अगरबत्ती में, लेकिन अंदर की लेयर्स मोटी स्टिक में जाएगी। और तो अभी अब मोटी स्टिक का भी एक बहुत बड़ा मार्केट खुल गया। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया इंडिया में 1 जुलाई से, जैसा आप सब जानते होंगे। और अभी मैं उस स्लाइड पे अलग से आता, लेकिन अभी आप बात कर सकते हैं। तो जितनी भी जगह पे अगर आप स्टिक देखेंगे तो वो सब अब उसका ऑल्टरनेटिव बैम्बू ही देगा। जैसे आपका कॉटन ईयरबड्स, आप जो कॉटन बड्स यूज करते हैं उसमें जो प्लास्टिक का डंडी आती है वो अब बैम्बू में यूज होगी 2.5 में। या लॉलीपॉप स्टिक है, बहुत बड़ा मार्केट है। या फिर बलून स्टिक्स है, कॉफी स्टीरर्स है, ये सब बैम्बू के लिए खुल गया है मार्केट। और दे आर डिमांड सर्च भयंकर है क्योंकि प्लास्टिक बैन हो गया है। तो ये सब जो अंदर का लेयर्स है बैम्बू का, बाहर के लेयर से अगरबत्ती बनाइए, अंदर के लेयर से मोटा स्टिक बनाइए। मोटा स्टिक मतलब 2 mm टूथपिक के लिए हो गया, 2.5 स्कीवर के लिए हो गया, 5 mm कुल्फी के लिए हो गया, और यही सब यूज होने वाला है कॉटन बड्स में भी और लॉलीपॉप में भी। तो इस तरह से आपको अंदर के लेयर्स को और बाहर के लेयर्स को समझना पड़ेगा। सिमिलरली अगर बैम्बू का टॉप और मिडिल सेक्शंस को देखेंगे आप, तो नॉट का दूरी ज्यादा होता है और इजी टू वर्किंग होता है, लेकिन नीचे हेवी वॉल थिकनेस होता है। तो हेवी वॉल थिकनेस को स्टिक इंडस्ट्री में ले जाने की जगह 4 साइड प्लेनिंग करके स्लैट्स बना सकते हैं। वो स्लैट्स का उपयोग मैंने आपको अभी बताया था। तो जो वेस्टेज निकलता है वो वेस्टेज को हम 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो ब्रिकेट्स बना सकते हैं, लेकिन ब्रिकेट्स आप तभी बना सकते हो जब बहुत वेस्टेज हो। छोटे मोटे वेस्टेज 500 किलो घंटे, 700 किलो घंटे का वेस्टेज हो तो ब्रिकेट्स बना सकते हो। दूसरा ऑप्शन है पैलेट्स बना सकते हो। ये पैलेट्स बनाने का अभी हम लोग ऑप्शन देते हैं हमेशा कस्टमर को। तीसरा ऑप्शन है कि जो वेस्ट निकल रहा है हम उसको फाइन डस्ट बना दे। जैसे मैं फोटो में देख रहे हैं, इसका वीडियो भी है मेरे पास। तो ये फाइन डस्ट बनेगा तो इसका अगरबत्ती इंडस्ट्री में बहुत अच्छा यूज हो सकता है। तो हमको बैम्बू का अगर एंटरप्रेन्योर बिजनेस डेवलप करना है तो हमेशा वेस्टेज के बारे में भी सोचना है, ये वेस्टेज कैसे यूज करें। जो सॉलिड नॉट के पोर्शन है, अगर आप नॉट टू नॉट बैम्बू स्टिक बना रहे हो तो सॉलिड नॉट के पोर्शन को 2 तरह से यूज कर सकते हो। या तो आप ड्रायर, बैम्बू वेस्ट ड्रायर आप यूज कर रहे हो तो उसमें आप उसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते हो, और नहीं तो आप ब्यूटीफुल टर्निंग प्रोडक्ट्स बना सकते हो, जो वैक्स स्टैंड, फ्लावर वास और वैक्स स्टैंड, फ्लावर वास और पेंसिल स्टैंड्स, और मालूम नहीं कितने यूज में आएगा, जो अमेजोन पर डायरेक्ट बिक सकता है या बल्क में भी बेच सकते हैं। वो टर्निंग मशीन के लिए हम लोग आजकल CNC लेथ मशीन भी देते हैं जिससे जल्दी काम होता है और बहुत फास्ट प्रोडक्ट बन सकता है। मग्स बना सकते हैं हम उससे, स्पीक राइट नॉट पोर्शन से। ये वीडियो है, लेट्स सी इफ इट रन्स। इट विल नॉट रन। ये राउंड स्टिक को नॉट के साथ भी यूज कर सकते हैं। देख रहे हैं ब्यूटीफुल स्टिक्स ये सब यूज होंगी
एक आपको बॉयलर टैंक लगेगा, क्योंकि अगर फूड आइटम में यूज होना है तो एक बॉइलिंग टैंक में उसका स्टार्च निकाल करके ही उसको ट्रीटमेंट होगा। तो ये पूरा ट्रीटेड आप एक कस्टमर के एंड से आए हुए फोटोग्राफ से जैसे। अच्छा, ये अनदर एक बहुत बड़ा एरिया है इंडिया में काम करने का, वो है ब्रूम स्टिक्स। आप सोचेंगे ब्रूम स्टिक्स में बैम्बू का यूज होता है, तो ब्रूम स्टिक में अगर आप ध्यान से देखेंगे जो फूल झाड़ू होता है उसका जो हैंडल होता है वो हैंडल इसी स्टिक्स का होता है जो फोटोग्राफ में दिखाया हुआ है। तो ये वाली स्टिक्स से मिलके हैंडल बनता है। दूसरा, अगर आप एमसीडी की झाड़ू देखेंगे जो सड़क पे लगती है, तो उसकी डायरेक्ट जो तीली होती है जिससे झाड़ू लग रही है वो भी बैम्बू की होती है। तो ये टनों वाला मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, और जो बैम्बू की अंदर की लेयर से वो इस काम में यूज होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट से ब्रूम स्टिक्स के लिए बहुत मटेरियल ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होता है, जो मशीनों से मैकेनाइज करके उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में भी ला सकते हैं। फिर थिन स्लाइवर्स, काफी स्टेट्स में आर्टिजन्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे आर्टिजन्स है जिनका बहुत स्किल है, लेकिन उनकी मैक्सिमम टाइम बेसिक काम करने में लग जाता है। तो अब गवर्नमेंट को चाहिए कि कैसे उनको थोड़ा सा मैकेनाइज कर दें ताकि उनका मैक्सिमम वैल्यू एडिशन बेस्ड प्रोडक्ट बनाने में लगे मेहनत और उनका स्किल सामने आए, इसके बजाय कि बैम्बू काटने में फाड़ने में। तो ये एक मशीन आप देख रहे हैं, थिन स्लाइवर मशीन है, इससे पतला पतला स्लाइवर्स निकल जाता है और इससे वीविंग प्रोडक्ट्स कैसे भी आप बना सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल वीविंग प्रोडक्ट्स बना सकते हो, जैसे फ्लावर वास से लेके मैट्स, डाइनिंग टेबल में मैट्स, पैकिंग मटेरियल, मतलब इनफाइनाइट यूसेजेस हैं बैम्बू में। जैसे जैसे आदमी इनोवेट करेगा उसको बेसिक मटेरियल सही मिलना चाहिए। दैट्स वेयर प्राइमरी प्रोसेसिंग मशीन्स आर इंपॉर्टेंट। फोर साइड प्लेनर का ये आप देख रहे हैं, फोर साइड प्लेनर का कैसे फ्लो चार्ट है, बैम्बू कटिंग किया, बाहर का नॉट निकाला, इसमें पैरेलल स्प्लिटिंग होगा, उसके बाद इंटरनल नॉट रिमूवर, कम टू साइड प्लेनर, फिर फोर साइड प्लेनर, स्लैट साइजिंग, बेल्ट सेंटर, सैंडिंग किया। फिर तो ये जो आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं सब रियल पिक्चर्स हैं। राउंड फर्नीचर, ये राउंड फर्नीचर तो आपको एक छोटा सा अपना उद्योग डालना है तो किस प्रकार की मशीन्स लगेगी ये हाईलाइट किया हुआ है। देखिए इसमें बैम्बू का ट्रीटमेंट प्लांट भी बीपीआई प्लांट 12 फीट का, और मुझे लगता है कि एक किसी को इस तरह के फर्नीचर का प्लांट डालना है तो 12-14 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको मैक्सिमम मैकेनाइजेशन मिल जाएगा और उसके बाद वो एक काफी अच्छा प्रोडक्शन करके अपना फर्नीचर बना सकते हैं। These are some more machines you can see. Again, these are all furniture machines. So how we enhance the value of our machines? तो हम लोगों का देखिए हमारा जो डिस्टिंक्शन है वो है कस्टमर ट्रस्ट, क्वालिटी ऑफ आवर मशीन्स, रिलायबिलिटी ऑफ आवर मशीन्स। जो हमारा मोटो है एक कॉमन एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल बनाना, बैम्बू एंटरप्रेन्योर को, और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए राइट मशीन्स, राइट गाइडेंस, राइट ट्रेनिंग देना। और लेकिन हम लोग सीखते कैसे, हम लोग कैसे मशीन्स में डेवलपमेंट करते हैं? तो see our laboratory is our customer itself, so we incorporate the feedback of our customers on continuous basis. We have created a learning organization, worked on various bamboos, रोज डिफरेंट बैम्बूज आते हैं, उससे सीखने को मिलता है। रेगुलर कस्टमर विजिट्स होती है, कल एक कस्टमर विजिट थी झारखंड से, हिसाब से थे, परसों एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से थे, आज एक बैंगलोर से होंगे। तो कोई ना कोई कस्टमर्स आते हैं with their own unique set of challenges and their own unique ideas of innovation कि कैसे उनको सामान बनाना है, उससे हम लोगों को सीखने को मिलता है, उनको सॉल्यूशन देते हैं एंड वी गेट द फीडबैक। और हम लोगों ने फंक्शनल एस्पेक्ट, वर्क ऑन द फंक्शनल वैल्यू ऑफ मशीन्स, लगातार फंक्शनल एस्पेक्ट्स पे काम किया। इंजीनियरिंग वाइज मशीन्स बहुत स्टडी होती हैं, बहुत वेल प्रिसिशन मशीन होती हैं, और हर एक एस्पेक्ट को एक एक करके एड्रेस किया है। फिनिशिंग क्वालिटी, सिर्फ मशीन का भी फिनिशिंग क्वालिटी और प्रोडक्ट का भी फिनिशिंग क्वालिटी, दोनों का बहुत ध्यान रखा जाता है। प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखा जाता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन निकाल सके कस्टमर, और रिलायबिलिटी हो, उसको रोज रोज मेंटेनेंस ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर आता है तो उसको रूट कॉज एनालिसिस करके उसको सॉल्व करते हैं। तो these are some of the salient features of machines. We can talk some other time. So business opportunities for entrepreneurs. तो कुछ अपॉर्चुनिटीज की तो हमने बात करी, जैसे राउंड स्टिक मशीन हो गया, अगरबत्ती हो गई, सिंगल यूज प्लास्टिक का भी हट रहा है, बास्केटरी हो गया, और आप और ज्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं बैम्बू से, जैसे बैम्बू बैग्स है या टॉयज है या लैम्प्स है। देखिए पहले मार्केट रेडी नहीं था, आज से 5-10 साल पहले से जब से बैम्बू में काम हो रहा है तो मार्केट रेडी नहीं था, पर आप काफी कॉमन कस्टमर एक्सेप्ट करने को तैयार है बैम्बू को। उसने नाम सुना हुआ है, न्यूज़पेपर्स में अब आता है, प्रधानमंत्री जी उसका नाम लेते हैं, गडकरी जी तो लगातार उसके ब्रांड एम्बेसडर बने ही हुए हैं, उसको बैम्बू को हमेशा एनकरेज करते हैं। तो
अभी अभी मार्केट रेडी है। और आप अगर टॉयज देखिए, कुछ कंपनीज ट्राई कर रही है इसको, जो अपने हमारे कस्टमर्स की जो टॉयज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लैंप्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैम्बू ब्लाइंड्स एक मेजर एरिया है जो पूरे इंडिया में उसका बहुत ह्यूज डिमांड रहेगा। कटलरी में भी काम होना बाकी है, रीयूजेबल और डिस्पोजेबल। रीयूजेबल पे तो हम लोगों ने मशीन बनाया है, लेकिन डिस्पोजेबल पे काम होना बाकी है। जो इतना ज्यादा मैरिज फंक्शंस में या एक बार यूज होकर बंद होता है, वो बैम्बू से कैसे बनाया जाए। टूथब्रश पे काम हो रहा है, टूथपिक, स्कीवर्स, कॉफी स्टिरर्स, इन सब पे हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कस्टमर्स को सॉल्यूशंस दे रहे हैं। चारकोल, चारकोल अपने आप में बहुत मेजर एरिया है जहाँ पे बैम्बू का रोल है। बैम्बू चारकोल सुपीरियर क्वालिटी का होता है। पाउडर, ब्रिकेट्स, फ्लोरिंग, बोर्ड्स, लैमिनेट्स, नॉकडाउन फर्नीचर। नॉकडाउन फर्नीचर देखिए, फर्नीचर अभी तक आपने जो देखा होगा वो ज्यादा करके थोड़ा हेवी क्वालिटी का फर्नीचर होता है। पर अभी समय आ रहा है धीरे धीरे जहाँ लोग ऑनलाइन ऑर्डर करें और नॉकडाउन फर्नीचर आके घर में वो असेंबल करना है। तो उस तरह का डिजाइन होगा, उस तरह के स्टैंडर्डाइजेशन होंगे, एक इंडस्ट्रियल बेसिस पे फर्नीचर का आइटम बनेगा। तो वो सब डेवलपमेंट होना बाकी है, जो एंटरप्रेन्योर्स टेकअप कर सकते हैं इनमें से कोई भी काम को। So idea is to highlight the kind of opportunities available. How to analyze a bamboo business opportunity? अगर कोई business opportunity सामने आती है तो क्या क्या किन पैरामीटर्स को आप देख सकते हो? Like you can first of all you can define a product. क्या प्रोडक्ट है, आपका कस्टमर कौन होगा, कौन सा सेगमेंट होगा, वो सब आप उस सप्लाई चेन में कहाँ ऑपरेट करेंगे। बैम्बू की सप्लाई चेन है, इसमें भी एक बात बताने की है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो बैम्बू रिसोर्स के पास है। तो बैम्बू में एक पर्टिकुलर फंक्शन रिसोर्स के पास होता है और एक पर्टिकुलर काम कस्टमर के पास होता है। कोई हैदराबाद में, पुणे में काम कर रहा है तो उसको डिसएडवांटेज है कि वो रिसोर्स के पास नहीं है, बैम्बू रिसोर्स, लेकिन वो कस्टमर के प्रॉक्सिमिटी है उसको। तो जो कस्टमर की प्रॉक्सिमिटी है तो उसका एडवांटेज वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाने में लेगा, जो उसका कस्टमाइज करने में लेगा। और जो प्री प्रोसेसिंग होके आना चाहिए वो अरुणाचल या मेघालय या असम से आना चाहिए। तो हम लोगों को अपना अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों को प्री प्रोसेसिंग हब्स बनाने चाहिए, जो इंडिया में लोगों को जिस फॉर्म एंड शेप में बैम्बू चाहिए तो उसको राउंड बैम्बू ना बुलाना पड़े, लेकिन कुछ प्रोसेसिंग करके हम उनको भेजें, ताकि एक तो उनका काम भी कम हो जाए और हमको भी उस वैल्यू एडिशन का कुछ बेनिफिट मिले। तो वो हम लोगों को वो एक मेजर अपॉर्चुनिटी है कि प्री प्रोसेसिंग हम बैम्बू की करें, हमारे खुद के स्टेट में एंटरप्रेन्योर्स हम खड़े करें जो वो एक रिलायबल प्रोडक्ट पुणे भेजें या हैदराबाद भेजें या लखनऊ भेजें, ताकि वो उसको फर्दर वैल्यू एडिशन करके अपने कस्टमर को पास ऑन कर सके। तो सप्लाई चेन क्रिएट करना बहुत जरूरी है हम लोगों को। इंडस्ट्री का एनालिसिस लगातार होना चाहिए, डेटा आना चाहिए डिमांड सप्लाई का। जैसे मैंने अगरबत्ती का डेटा तो दे दिया, लेकिन मेरे को दूसरी इंडस्ट्रीज का डेटा मैं ढूंढूंगा तो नहीं मिलेगा। तो इंडस्ट्री का एनालिसिस होना चाहिए, शॉर्ट एनालिसिस होना चाहिए, मतलब हमारा स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स क्या है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में लैंड बहुत सस्ता है, आसानी से मिलेगा, बहुत लैंड है, बैम्बू बहुत अच्छा है, इवन मोजो बैम्बू आपको बहुत वहाँ पे डेवलप हो सकता है, प्लांटेशन आ सकते हैं, वो हमारी सबकी स्ट्रेंथ है। और वीकनेस क्या है, वीकनेस शायद लेबर होगा, लेबर वहाँ पे उतना आसानी से जो हार्ड वर्किंग लेबर है वो मुझे लगता है कि वो शायद एक चैलेंज होगा। और हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये बैम्बू अपने आप में सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो मैं लगातार अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा हूँ। थ्रेड्स अभी एज ऑफ नाउ मेरे को नहीं दिखते, कोई थ्रेड्स हमें बैम्बू इंडस्ट्री में नहीं है अभी। तो ये अपकमिंग इंडस्ट्री है, अगले 5-10 सालों में इसमें काफी ग्रोथ और इनोवेशन होना है। डिफाइन कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू डेवलप एंड रन द बिजनेस। हाँ, ये जरूरी है। जैसे कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर आता है तो हम देखते हैं कि उसमें वो कॉम्पिटेंसी है भी कि नहीं, क्योंकि हैंड्स ऑन अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, अगर खुद से वो फैक्ट्री जा करके उसमें इम्प्रूवमेंट करना, उसके फ्लो को देखना, क्वालिटीज फिक्सअप करना, लोगों को ट्रेनिंग देना, अगर वो सब कॉम्पिटेंसीज नहीं है उस बंदे में, तो उसको फिर ये वाला बिजनेस नहीं लेना चाहिए। तो वी हैव टू डिफाइन कि हमारे बिजनेस में क्या कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है। चेक आउट द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अच्छा, इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक बार मशीन पे पैसा डालना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, हमको फर्दर वेस्ट यूटिलाइजेशन करने में क्या पैसा लगने वाला है 6 महीने में, वो भी इन्वेस्टमेंट में आएगा, वर्किंग कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट में आएगा, वर्कशॉप में सारी फैसिलिटीज लाना भी इन्वेस्टमेंट में आएगा। तो पूरे इन्वेस्टमेंट को कॉम्प्रिहेंसिवली देखना चाहिए, तब जाकर के हम बोल सकते हैं कि ये इतना इन्वेस्टमेंट हमारे पास है कि नहीं। तो वी हैव टू चेक आउट द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन बिजनेस इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हमारे पास फैक्ट्री स्पेस है कि नहीं, कैपिटल हो गया, स्किल्स हो गए, स्किल्स डेवलप किए जा सकते हैं। इसमें इतने मेजर स्किल्स नहीं लगते हैं, 1 या 2 टेक्निकल पर्सन होना चाहिए वर्कशॉप में जो टेक्नोलॉजी को समझ सके और फिर बाकी लोगों को सिखाया जा सकता है। लेबर अवेलेबल है कि नहीं लोकल एरिया में,
कॉस्ट कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के समझ में आना चाहिए कि कितना बैम्बू लगेगा, कितना लेबर लगेगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, तो प्रॉफिट और अल्टीमेटली हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस आना चाहिए। तो ये सब आने से हम लोग एक अच्छे बिजनेस को तैयार कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ बैम्बू। तो देखिए बैम्बू में मैंने बताया था सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसको ऊपर का पार्ट एक अलग उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मिडिल पार्ट अलग है, बॉटम पार्ट अलग है। तो लेट द लोअर पार्ट गो टू फर्नीचर इंडस्ट्री। मतलब जो बॉटम पार्ट है इसमें मायने क्या है कि कुछ अलग अलग वेराइटी की इंडस्ट्रीज आसपास हो, थोड़ी क्लस्टर अप्रोच हो। तो ये होगा कि एक जने का जो वैल्यू एडिशन पार्ट है उसने वो रख लिया और बाकी पार्ट दूसरे को पास ऑन कर दिया, तो इसके लिए जो वेस्ट है वो उसके लिए असेट बन जाएगा। तो मिडिल पार्ट कैन गो टू द स्टिक इंडस्ट्री, अपर पार्ट कैन गो टू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इमेच्योर बैम्बूज कैन गो टू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वेस्टेज कैन गो टू चारकोल, बैम्बू पाउडर इंडस्ट्री। तो एक क्लस्टर अप्रोच लेके चलना अच्छा है, जहाँ वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज है एक एरिया में। यहाँ पे मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, जो मैंने त्रिपुरा में मॉडल देखा, त्रिपुरा में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, स्पेशली इस प्रेजेंटेशन में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज से भी हैं, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज और बैम्बू मिशन एक ही लीडर के अंडर में था, जो मैं समझ पाया था उस समय। तो उन्होंने क्या करा, पूरा जो इंडस्ट्रीज अवेलेबल थी, इंडस्ट्री स्पेस, उन्होंने बढ़िया इंडस्ट्री स्पेस तैयार कर दी, जहाँ पे फ्लोरिंग हो, लाइट हो, पानी हो, और पूरा क्लस्टर जैसे 7-8 इंडस्ट्री आसपास है, जो कुमारघाट क्लस्टर की बात कर रहा हूँ। और बाद में उन्होंने उनको बैम्बू मशीन भी खरीद के दी, काफी कॉम्प्रिहेंसिवली एनालाइज करके कि मार्केट में सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है। L1 से नहीं गए, बेस्ट प्लेयर मार्केट में सबसे अच्छी क्वालिटी जिसकी मशीन चलेंगी वो कौन है, वो करके और उन्होंने रेंट पे दे दिया। तो एक एंटरप्रेन्योर है, अगर सपोज समझ लीजिए एक नाम से मैं एंटरप्रेन्योर है, अगर उसको बैम्बू इंडस्ट्री में काम करना है, लेकिन अब उसके पास कैपिटल नहीं है, वो फैक्ट्री डालने से रहा, कैपिटल नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने एक फैक्ट्री रेडी करके दिया हुआ और उसमें कुछ मशीन्स लेके भी दिया उसको रेंट बेसिस पर, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो उस फैक्ट्री को रन करके कमा जाएगा और इंडस्ट्री चल पड़ेगी। तो ये एक मुझे हमेशा लगता है कि ये मैं एक बार शेयर करूँ एक्सपीरियंस, कि इस तरह से शायद हम लोग बैम्बू इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकते हैं। तो आवर रोल एज अ मशीन मैन्युफैक्चरिंग क्रिएटिंग सक्सेस स्टोरी है। मैंने बार बार बात की है बीच में कि प्राइमरी स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग, बैम्बू सोर्सिंग है कि नहीं किसी के पास। अब अभी हमारे काफी कस्टमर्स गुजरात में भी हैं जो बैम्बू में काम कर रहे हैं, लेकिन वो देखिए उनके पास बैम्बू कितना महंगा आता है, फिर भी वो लोग काम कर रहे हैं और पैसा कमा पा रहे हैं, प्रॉफिटेबली काम कर रहे हैं। स्पेस अवेलेबल है कि नहीं, कैपिटल है कि नहीं, कैपेबिलिटी टू रन अ फैक्ट्री है कि नहीं, प्राइमरी स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं। फिर राइट प्रोसेस चूज करते हैं, राइट मशीन चूज करते हैं। Then we give extensive training on how to operate and maintain the machines. We do site visits, मेरा भी विजिट होता है, टेक्नीशियन का विजिट होता है, और कस्टमर से ऑन एंड ऑफ जब बातचीत होती है तो वी ट्राई टू गाइड हिम कि कौन से पार्ट ऑफ बिजनेस पे ज्यादा फोकस करना है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द अनइम्पोर्टेंट पार्ट्स। And our constant endeavor is to understand our customers' requirement. Always available for discussion, troubleshooting, guidance. I think इस स्लाइड के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन फिनिश करता हूँ। तो की रिक्वायरमेंट्स ऑफ सक्सेस इन बैम्बू बिजनेस, तो काफी पॉइंट्स कवर हुए हैं, लेकिन एक बार रिपीट करता हूँ कि एंटरप्रेन्योर शुड बी रेडी टू डर्टी हिज हैंड। मतलब थोड़ा हैंड्स ऑन होना चाहिए, नहीं तो बिजनेस बैम्बू बिजनेस को करना मुश्किल है। पैशन फॉर बैम्बू एंड ग्रीन प्रोडक्ट, मतलब अभी जो सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा जो गोल है पूरे वर्ल्ड में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, उसमें बैम्बू ही फिगर आउट होगा सबसे टॉप पे। और अगर हमको पैशन है ग्रीन इंडस्ट्री के लिए, बैम्बू इंडस्ट्री के लिए, तो वो होना जरूरी है एक बैम्बू बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। मटेरियल को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, जिससे मैंने बताया फाइबर की प्रॉपर्टीज, बाहर की लेयर के फाइबर्स, अंदर की फाइबर्स, कैसे फाइबर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी या किस प्रोसेस से काम करेंगे तो फाइबर्स इंटैक्ट रहेगी। अच्छा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, क्वालिटी वगैरह समझ में जल्दी आना चाहिए। कंटिन्यूस प्रोसेस इनोवेशन होना चाहिए। प्रोसेस इनोवेशन हमारा मतलब बैम्बू को प्रोडक्ट बनाने में भी और प्रोडक्ट के साइड भी इनोवेशन होना चाहिए। तो वो एक रिक्वायरमेंट है सक्सेस की बैम्बू इंडस्ट्री। एपेटाइट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, देखिए बैम्बू में आप काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा एपेटाइट होना है एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, कि कौन सा बैम्बू यूज करना है, उसकी कितनी एज है, कौन सी मशीनरी, कौन सा प्रोसेस। तो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए एपेटाइट होना चाहिए, और हमेशा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के लिए माइंडसेट होना चाहिए, सो दैट वी कैन यूटिलाइज द बैम्बू इन बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड गेट द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ इट। और इन सभी पार्ट्स में हम लोग अपने एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं। सो आई थिंक दिस कैन गो ऑन।
but my last slide would be a good machine manufacturer needs a good hard working entrepreneur. हम लोग एक अच्छे मशीन मैन्युफैक्चरर होने से भी हमको हार्ड वर्किंग एंटरप्रेन्योर मिलने के बाद ही बैम्बू बिजनेस सक्सेस होगा। और मैं चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश के एंटरप्रेन्योर्स के साथ हमें जितना काम करने का मौका मिला, विल बी वेरी ग्रेटफुल। थैंक्स अ लॉट। Thank you, sir. Thank you, Rohit. Very good presentations. I've learned a lot. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for your informative session. I hope our participants have benefited from your presentation. So, with the last speaker, we have reached the last part of our session. So I would like to extend my gratitude to Dr. Devapriya Datta, Head and Scientific Advisor, and his team from C Division, DST, Government of India. I would also like to thank Sri C.D. Muniak, Director cum Member Secretary, APSCS Council for Science and Technology. I extend my heartiest thanks to all the eminent speakers of the day. I would also like to offer my thanks to all the participants for their presence. Once again, thank you all for being with us. I would like to conclude the session here. Thank you all.